those who have not attended the class, the video is available in the group. Geography lecture 1 रो वीडियो अवेलेबल अच्छी तो देखिदेव तो जस्ट मुझे तार रिवाइजिंग कराऊली जियोग्राफी लेक्चर 1 जहाँ मैं पढ़ते लास्ट टाइम द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ओके सो आम जहाँ पढ़ी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आसला एंड तापर तार पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी आसला सो एबे मु जस्ट कन्वेक्शनल करंट थ्योरी विषय रे कहिदेबी and then I will be making you write the answers. Okay. So convectional current theory एटा कहीं की आसिला just give me 1 second just paint problem in the pen just give me ठीक अछि देखिबा कोन प्रॉब्लम होछि सो हम देखले कि convectional current theory it was given by author Holmes. Okay, now who is author Holmes? Okay, so convectional current theory was given by author Holmes. Now author Holmes convectional current theory कौन पे देले? One of the major reason which because of which the convectional current theory came was that the आगुरी जोटा थिला excuse me continental drift theory रे जहाँ भी वेगनर जो फोर्स कही थे कि continental रो ड्रिफ्टिंग करिया पे जो फोर्स that is the polar flea force and the tidal force they were responsible for the drifting of the continent but author Holmes से कहले कि no these forces are not reasonable enough to move such large continents so तापर आसिला the convectional current theory. Convectional current theory was given in 1928-29. Now, why this theory came? Now, it is widely accepted driving mechanism for the continental drift, which leads to the foundation of the modern plate tectonics. Now, we will see कि convectional current theory कौन कहूची. Okay. Now, we will see कि convectional current theory कौन कहूची. Okay. Just think. You can draw with me. Okay. So this part is the asthenosphere and these are the convection cell. These are the convection cell. Cell माने current. Okay. Convection cell. Okay. तो ए जो देखुच ए जो राइजिंग लिंक ऑफ मैग्मा ओके दिस राइजिंग लिंक ना ए करंट गुराक जेतेबेले अपोजिट डायरेक्शन रे मूव करूछंती ए प्लेट जो देखुच ए प्लेट गुराक भी अपोजिट डायरेक्शन रे मूव करिवो ओके ए प्लेट गुराक भी अपोजिट डायरेक्शन रे मूव करिवो एंड ए मझिरु जो मैग्मा अछि
ए मझिरु से मैग्मा कौन करिवो बाहरिवो and there will be formation of like this small parallel chain of mountains. So एटा कहूची convectional current theory. We will see. So देखो पानी जेमती आमे गरम करूचे जेतेबेले आमे पानी गरम करूचे I will show you here. एबे कन्वेक्शन करंट कोन जो माने बुझी पारना फॉर एग्जांपल एठी गोटे अछि जगह दिस वन इज द फायर जेतेबेले आमे पानी गरम करूचे किछि समय पर देखिबो कि स्मॉल बबल्स विल बी गोइंग अप okay small bubbles will be going up and after some time you will see that again that bubble will come down and like this cycle will be going on. Now when anything becomes lighter it rises up. So जेतेबेले ए बबल टा गरम हे जाउची it rises up. When it reaches up it comes with the contact of the atmosphere. आउ ए वाटर लेयर जति की टेम्परेचर अच्छी ऊपर लेयर रो टेम्परेचर ताठू लो थिबो टेम्परेचर यार लो थिबो तो जेतेबेले ए बबल गुरा को एटमॉस्फेयर लेयर रो कांटेक्ट रे आसुचंती दे आर बिकमिंग कूलिंग डाउन. सो व्हेन दे आर कूलिंग देयर डेंसिटी इंक्रीजेस तांकर डेंसिटी इंक्रीज हे जाउची एंड एज द डेंसिटी इंक्रीजेस इट स्टार्ट अगेन कमिंग डाउन. So this is the example of a convection cell or convection current. Even convection current happens in the wind also. Wind रे atmosphere रे भी convection current हुए. Okay. So this you can see this red a bubble गुरा को ऊपर को जाउची hot it becomes less dense and the water rises and तापरे it cools down become more dense and it's come down. The same thing is happening in the asthenosphere, that is the mantle. जो ठीक की mantle is in the molten state. सेटा molten state रे अछि because there is the presence of lava or magma. So due to the radioactive decay of the substances, ना मैं जानी चे कि हमारा अर्थ रे इंटीरियर रे radioactive substances माने अछंती जेतेबेले से माने decay करंती they produce heat. So with that heat they rises up. जेतेबेले से माने rise करंती in the up they cool down, they become more denser, पुणी से माने तल को आसती. So this cycle convection current goes on and this due to this convection current जोठी a limb गुरा को diverge होचंती. Here you can see the limb which diverging. Okay, जोठी a limb गुरा को diverge होचंती सेठी continent गुरा को they are spreading apart. Today actually there is some problem with my pen, it is not working here, so I will find the solution what has happened actually. Till that you can just see the diagram here. So the जोठी limb गुरा को diverge होचंती. Now this is divergence and this is convergence. See, this is divergence and this one is divergence and this one is convergence. Theta ko pakhu ko asiba, this one is the convergence and opposite direction re jiba is the divergence. So you can see in the middle of this the magma is rising and the current is diverging in the opposite direction. तो जो पटे से माने डाइवर्ज होचंती सेठी कोन हबो ऊपर जो प्लेट अछि से प्लेट टा स्प्रेड करिवो. तो जेतेबेले प्लेट टा स्प्रेड करिवो लावा ऊपर को जिवो. तो सेठी पई ऑथर होम्स कहउचंती बिकॉज़ ऑफ दिस कन्वेक्शन करंट ओनली द टेक्टोनिक प्लेट्स आर मूविंग. एति की बुझी हला. Okay, so you can just see here according to this theory the intense heat generated by the radioactive substances na in the answer radioactive word ta asiba darkar jetebole main so tam answer likhibo this radioactive word answer je bi tomoro examiner jetebole tomoro paper check karibo he will not be reading your all and everything. Now the trick for getting good marks is you have to draw good diagrams in geography. Geography is all about diagrams and map. So एठी मु जो डायग्राम देखौची सेटा तमे केबे भी पेपर रे ड्रा करि पारिबनी. मु जो डायग्राम ड्रा करिथिली एबे that diagram only you will be drawing in the paper. So मु जो diagram भी draw करूची try to do that diagram. Okay, so this diagram you will be doing in the paper. These are the convection cell, this is the
will not write lithosphere, we will write in the crust. Crust, this is the divergence zone. एठी divergence zone होची and एटा जो होची, these are the mid oceanic ridge. ଯେତେବେଳେ ଲାଭା ବାହାରକୁ ଆସୁଛି, ଲାଭା କ'ଣ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପାଣିର ଟେମ୍ପରେଚର ଆସି ସାରିଲା ପରେ ସେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉଛି. as soon as it becomes cool, से कौन करुच्ची गोटे रेंज ऑफ पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन बने दबो, जोटा कि हमें देखिबा. ओके, नाउ दिस डायग्राम यू विल बी डूइंग इन द एग्जाम एंड दिस इज द एंड तळे एमती तमे लिखिबो फिगर होउची कन्वेक्शन करंट ब्रैकेट रे ऑथर होम्स. You will be writing that this is according to whom? This is according to the author Holmes. This convection current, even you can give like this. This limb, you can bring it here and you will be writing this is the diverging link or the ascending and ascending माने ऊपर को जाउची, ascending and diverging limbs. Okay, these are the ascending and diverging link. डायग्राम बनाओ. These are the ascending and diverging link. So I'll give you just 1 minute. Video will be available after this class. Video will be available. So जहाँ भी जो भी miss हो जाती वो, you can watch the video again and complete your work. है ना? Okay. Next is this is the convection current. Okay, now this a diagram ta actually mu chhadithile ethi kariya pai, but jehetu aji ethi mor pen ta kamo karuni, so I have done the diagram in that one note. So in exam you will be doing that figure. Okay, now after this we will be studying sea floor spreading, but before that last class रे हमें जहाँ पढ़ी continental drift theory, I will be detecting the answer and you will be writing it. So please write along with me. Continental drift theory. So how we will write now, and answer emiti habo. There will be a part of introduction. Okay, next there will be the main body and there will be a conclusion. In the main body we will be writing जो भी theory थी वो, its assumption and its theory, along with the positive and the negative. This is called critical analysis. Critical analysis of the theory. Ako hi konti critical analysis. It means we will be writing the positive aspects of this theory and the negative aspect of this theory. So please write the continental drift theory. No, let's start like this. Sorry, we will have some good introduction. Right, the permanency of the continents were challenged by different theories. Now this thing you will not be finding in any books. No. Okay, this introduction you will have to build up on your own. जेते तमे जेते पढ़िबो सेते तमे इंट्रोडक्शन देबा पे तमरो माइंड रे you will be building good knowledge. Okay, the permanency of the continents were challenged by different theories, and among such theories the continental drift theory was a major one. Now see, आम इंट्रोडक्शन कौन कहूची ना, आगुरु जो माने कहूथले कि नो दिस कॉन्टिनेंट्स गोटे ही जगह रे अछि, एटा मूव करूनी, सेटा मु कहली द परमानेंसी ऑफ द पोजीशंस ऑफ द पोजीशन of continents
were challenged by different theory ଆସିଥିଲା ୟାକୁ challenge କରିବା ପାଇଁ, but out of that the continental drift theory was a major one. The continental drift theory was given by Alfred Wegener bracket रे 1912. अरे मो सहित लिखुछ तो, are people writing with me? Okay. The theory talks about the rifting and drifting of continents which have given rise to the present day arrangement of the continents. Now this is our introduction part. आम introduction part रे कहीदेले आमर जे एग्जामिनर थिला से जानी गला एठू कि दिस बॉय दिस पर्सन इज हैविंग ए गुड नॉलेज अबाउट दिस थ्योरी, से एठू ही जानी देला. एबे से तमरो थ्योरी का पूरा पढिबनी. नाउ ही विल बी ओनली सीइंग योर डायग्राम्स, योर assumption and you will be getting good marks. एठू तमे कहि देलो कि आई हैव दिस आइडिया ऑन दिस कांसेप्ट, मु जानी छी या विषय रे, तमे इंट्रोडक्शन रे ही ताको कहि देलो. ओके, नाउ we'll be writing some basic assumption. ए थ्योरी रो किछटा बेसिक assumption अछि, जो बेसिक assumption जोगु ही विल्फ्रेड वेगनर को प्रॉब्लम हेतला. Now write assumptions. So first assumption is वेगनर कहले कि the Sial floats on Sima without any resistance. Without any resistance. माने से कौन कहउचंती कि if this is the Sial and this is the Sima, that is the asthenosphere. Sima which actually asthenosphere. Now से कहउचंती कि जे Sial is floating on this Sima without any resistance. किछि resistance नहीं. Okay, no resistance. ए डायग्राम करियार नहीं, जस्ट आउ तुम बुझे पे. Next assumption is the forces responsible. See एटा मु बोट गोटे बही रे एमती लिखाई कि assumption नहीं गोटे ही सेमान नउचंती, तापर सेमान लिखौचंती कि the forces responsible, but this was the assumption of Alfred Wegener. से एटा assume ही करूथिले कि the forces which were responsible for this were the two forces. So एको हमें assumption नहीं लिखिबा, अलगा लिखिबा. So the forces responsible for the drifting was number 1 होची tidal force, that is the gravitational pull of sun and moon लिखिबे, moon and sun. कहीं कि moon and sun लिखेली, कहीं कि sun and moon लिखेली, because moon earth रो पाखे रे अछि and the gravitational force of the moon is more than the sun. सेट में लिखिबो the gravitational pull of moon and sun, not sun and moon. The gravitational pull of the moon, that is the gravitational pull of the moon and sun is responsible for the westward. ठीक है, स्पीड लिखिबा, तापर तमे पढि दबो, जानि परिबो कि थ्योरी कोन. Westward drifting of the continents. Okay, the tidal force, that is the gravitational pull of the sun and moon, is responsible for the westward drifting of the continent. आउ गोटे कोन थिला
polar free force. Polar free force ना polar free force रो कौन थिला? Polar free force से कहूँ कि the polar free force was responsible for the movement of the continents towards the north. Now it was responsible for the movement of the continents towards the north. यार थिला वेस्टवर्ड मूवमेंट, एटा थिला नॉर्थ मूवमेंट. एतिक बुझे गला. नेक्स्ट आमर बेसिक एजम्पशन सरी गला, इंट्रोडक्शन सरी गला. अरे लिखलानी कि मो सहित लिखुछ तो स्पीड टिके लिखियो रे. हो ठीक अछि. नेक्स्ट इज द थ्योरी. व्हाट हैपेंड? नेक्स्ट इज द theory. Now theory, what is Wegener telling? Now Wegener is telling before the Carboniferous period there was a supercontinent known as Pangaea. Before the Carboniferous period there was a supercontinent known as, मु के बाय लिखछु तुम पूरा लिखियो, known as मु एमती लिख दोछि Pangaea. In the Carboniferous period the Pangaea broke into two parts. The northern part was known as Laurasia and the southern part was known as Gondwana. Next, the breaking of this Pangaea into two parts led to the opening of Tethys Sea. से कहते कि जो Pangaea को सराउंड करूला पैंथालासा, जेतबेले Pangaea दीटा पार्ट रे ब्रोक हे गला, से मझीर जगाटारे जो सी फॉर्मेशन हे गला, दैट इज नोन एज द Tethys Sea. Okay, the breaking of this continent led to the opening of the Tethys Sea. तापर से कहउछंती the Laurasia further broke North America and Eurasia. Eurasia माने यूरोप आउ एशिया हला. While the Gondwana broke into South America, Africa, Madagascar, peninsular India. Now I am not writing whole India because whole India आगुरु नथिला. जेतबेले कॉन्टिनेंटल जेतबेले प्लेट टेक्टोनिक पढ़िया सेतबेले हम देखिबा कि जेतबेले इंडियन प्लेट जाइंकरी यूरेशियन प्लेट सहित कोलाइड कला, ता पर ही हिमालयस फॉर्मेशन थिला. आगुरु हिमालय इंडियन प्लेट रे नथिला. हिमालयस वर द यंग फोल्ड माउंटेन. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग पेनिनसुलर इंडिया, नॉट द होल इंडिया. ऑस्ट्रेलिया, Falkland Islands, Antarctica. Okay,
So the Laurasia further broke into North America, Eurasia, while the Gondwana broke into South America, Africa, Madagascar, Peninsular India, Australia, Falkland Island, and Antarctica. Next, we will be writing the drifting of both the Americas, माने नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, ठीक है ना. द ड्रिफ्टिंग ऑफ बोथ द अमेरिकास टू द westward led to the opening of a S-shaped ocean known as Atlantic Ocean. ଯେତେବେଳେ just one second, see ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟା ड्रिफ्ट होउछंती गोटे जगह अछंती ना, जेतेबेले मन ड्रिफ्ट हेकी अलगा हे गले, दिस हैज लेड टू दिस एस शेप्ड ओशियन. ए मझिरे देखाउ छि ओशियन, दिस हैड लेड टू द ओपनिंग ऑफ दिस एस. दिस वन इज द अंटार्कटिक ओशियन, हला एस शेप्ड ओशियन व्हिच इज द अंटार्कटिक ओशियन. नो राइट. एठी लिखिबा the northward drifting of Indian plate and African plate. ना ये plate आनी बानी, because we are not talking about this plate tectonic. Sorry, plate लिखी बानी, technically भूले जो. The northward drifting of India and Africa. प्लेट एथि लिबे देली बिकॉज प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी या परे आसला, प्लेट रो कांसेप्ट सेते बेलको नथिला, हला. तो आंसर टेक्निकली भूले जो. द नॉर्थवर्ड ड्रिफ्टिंग ऑफ इंडिया एंड अफ्रीका रिड्यूस द साइज ऑफ द टेथिस सी एंड लेड टू द opening of Indian Ocean. Led to the opening of Indian Ocean. Now we will see this first here. See second diagram रे एटी देखो, लॉरेसिया आगो ब्रोक हे गला टू पार्ट्स को, हला. तापर एटी देखिवो अफ्रीका एटा मंझी रे जोटा अछि एटा होची 33 सी. यूरोप और अफ्रीका मंझी रे एटा होची 33 सी. नाउ अफ्रीका मूवमेंट करिवो, India भी move करिवो, and you see that the Tethys Sea has reduced here, and the only part of the Tethys Sea that we are having today is this part, Mediterranean Sea. मैप रे मु देखेबी the Mediterranean Sea. Don't worry, right? बुझेला. The next point, एई पॉइंट रे ही वेगनर भूल करिवे, सेत में एटा को गोटे स्टार मार्क दे देथबा. अकॉर्डिंग टू वेगनर, while drifting the edges of the continent due to the friction and resistance between Sial and Sima gave rise to fold mountains. देखो assumption रे मु लिखई थली कि वेगनर कहउचंती कि तमे निजर assumption रे देखो कि वेगनर कहउचंती कि सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा विदाउट रेजिस्टेंस, एंड एबे से कहउचंती निजर थ्योरी को प्रूफ करिया पई. नाउ ही इज टेलिंग दैट सियाल एंड सीमा व्हाइल ड्रिफ्टिंग टुवर्ड्स द वेस्ट तांको भीतर फ्रिक्शन जोगु एंड रेजिस्टेंस जोगु कोन हला ना फोल्ड माउंटेन्स क्रिएट हे गला.
ଯେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱେଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଯାଉଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରିକ୍ସନ୍ ଆସିଲା ଧୀରେ 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 କ'ଣ ହେଲା ନା ତାଙ୍କ ଏଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଣ୍ଡ ଫୋଲ୍ଡିଂ ହେଇକି ଏଜେସ୍ ଗୁଡ଼ାକରେ ଫୋଲ୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଇଟା ୱେଗନର କହିଲେ ହେଲା। दैट इज एग्जाम कॉन्ट्राडिक्ट केमती कला देख सी प्रथम कथा होची एजम्पशन रे आमे लिखले कि वेगनर कहउचंती कि सियाल फ्लोट्स ऑन सीमा विदाउट रेजिस्टेंस हाँ कि नहीं? ओके नाउ जस्ट wait, now just think this one is the Pangea किछ करनी just खाली बुझ Pangea broke into two parts. This one is the Laurasia, this one is the Gondwana. Now this opening led to the formation of Tethys Sea. Okay, now he is telling this Gondwana broke into further Africa, peninsular India, Antarctica, Australia. एटा ही थिला पूरा कौन दिस वाज द ओल्ड गोंडवाना राइट ओल्ड गोंडवाना दिस वन इज अफ्रीका दिस वन इज पेनिनसुलर इंडिया दिस वन इज ऑस्ट्रेलिया एंड दिस वन इज आवर अंटार्कटिका ओके एबे से वेगनर कहउछंती कि ना ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग जेतेबेले से मन ड्रिफ्ट करूछंती now think this one is the Sima or the molten magma या उपरे जेतेबेले गोटे कंटिनेंट just think this one is the South America just भाभी दियो कि this one is the South America सी कहते कि जितेबाला साउथ अमेरिका तार वेस्ट वार्ड को ड्रिफ्ट करता एंड थिंक दिस इज ड्रिफ्टिंग ईयर आगु साउथ अमेरिका एटी थिला एबे वेस्ट वार्ड ड्रिफ्ट करछि एई एज मानकरे दिस मोल्टेन सीमा एंड ए कंटिनेंट भीतर रेजिस्टेंस मूवमेंट जोगु विथ टाइम एज मानकरे धीरे धीरे माउंटेन्स फॉर्मेशन हम जेते से माने मूव करिवे विथ टाइम एज मानकरे यंग फोल्ड माउंटेन फॉर्मेशन हम बिकॉज एज रे जो सेडिमेंट गुराक अच्छी दे विल बी कौन दे विल बी कंपैक्टेड एज रे जो सेडिमेंट अच्छी से माने कंपैक्ट होइजिबे आ तांकर ए कंपैक्टनेस जोगु से माने राइज हेबे आ राइज हेके दिस विल बी द यंग फोल्ड माउंटेन्स एबे बुझियला से केमिति कॉन्ट्राडिक्ट करथले आगुरु से कहते कि सीमा फ्लोट करुछि विदाउट एनी रेजिस्टेंस बट फर्दर थ्योरी से कहते नाउ सीमा इज प्रोड्यूसिंग रेजिस्टेंस टू सियाल बिकॉज ऑफ व्हिच एज मानकर यंग फोल्ड माउंटेन रो फॉर्मेशन हबो बुझियला कॉन्ट्राडिक्शन होछि एटा यस कॉन्ट्राडिक्शन होछि यस 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 एटा ही कॉन्ट्राडिक्शन हैला बुझियला ओके नेक्स्ट नंबर 6 पॉइंट से कहउछंती वेगनर also told that the island arcs and festoons now festoons होची small islands हला festoons were formed due to the differential rate of movement of the continents
या माने कौन बुझाऊँ आगे लिख दियो Wagner also told that the island arcs and the festoons were formed due to the differential rate of movement लिख सारा ओके now differential rate of movement कौन देखो आगुरु एटा so now just don't do the diagram एटा तुम मानक पे बुझाय पे खाली कहूँ okay so this one is the North America this one is the South America this is the Africa Eurasia now 80 Eurasia मो कहूँ but मझी रे 80 अच्छी the Ural Mountains को mountain the Ural Mountains है तो Ural Mountain रो left को होची यूरोप and right को होची रशिया okay now this is the Indian peninsula now not Indian peninsula this is the India this is Australia New Zealand and this is the Antarctica ना सुनो आगुर एगुड़ाक सब सेम थिले गोटे ही कंटिनेंट थिले जेतेबेले एमाने वेस्टवर्ड ड्रिफ्ट कले आउ एमाने अप ड्रिफ्ट कले से कहउछंती कि डिफरेंशियल रेट किछिटा कंटिनेंट बहुत जल्दी जल्दी रे मूव कले फॉर एग्जांपल इंडिया सॉरी फॉर एग्जांपल अफ्रीका फॉर एग्जांपल इंडिया एमाने बहुत जल्दी जल्दी मूव कले जा फल रे ए छोटो छोटो कंटिनेंट जो गुराक अछि मैडागास्कर दिस इंडोनेशिया याकू कोंती आइलैंड आर्क्स एठी अछि फिलिपाइंस ओके ए आइलैंड आर्क गुराक पछरे रही गले बिकॉज ऑफ दिस डिफरेंशियल रेट ऑफ मूवमेंट केतेटा कंटिनेंट्स आगो जल्दी जल्दी मूव कले केतेटा कंटिनेंट्स पछरे रही गले जेमती कि ऑस्ट्रेलिया so because of this differential rate of movement the island arcs and festoons were formed एति की बुझी हला एबे जो पॉइंट मु लिखेली the island arcs and festoons were formed due to the formation due to the differential rate of movement हला आउ देखो आगुरु this is the Mediterranean Sea ए जोटा देखुछ this one is the let me change the color this part it was the Tethys Sea एटा आगुरु ही Tethys Sea थिला got reduced due to the movement and now we call this part as the Mediterranean Sea हला जोटा हमें कहले कि Tethys Sea got reduced and the only remnant portion of the Tethys Sea is the present Mediterranean Sea okay बुझी हला डिफरेंशियल रेट कोन okay now okay we will be writing the next is the criticism of this theory आमे theory कोन लिखि देले एबे तारो criticism लिखिबा प्रथम कथा होची Wagner could not explain the forces responsible for this drifting हला Wagner couldn't explain the forces responsible for drifting
से एक्सप्लेन करि पारलेनी because the tidal force and the polar fling force are not so strong, therefore they cannot drift continents. First criticism जानिला तांकर फोर्स कहते वेगनर कहते कि द पोलार फ्लिंग फोर्स एंड द टाइडल फोर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट बट एटा ही तांकर क्रिटिसिज्म कि एई दीटा फोर्स एते भी बड़ नुह कि माने एते बड़ बड़ लार्ज मासेस ऑफ कंटिनेंट को मूव कर देबे. नेक्स्ट होची वेगनर couldn't explain the trigger factor or trigger mechanism which was responsible for breaking of Pangea. वेगनर ट्रिगर मेकानिज्म कि कौन आगुरु कहीं ब्रेक होनुतला एबे ही कहीं ब्रेक हला व्हाट इज द ट्रिगर मेकानिज्म से एक्सप्लेन करि परलेनी केमिति एक्सप्लेन करथांते जे जेतेबोली से निजे ही जानि नांती कि व्हाट इज व्हिच फोर्स इज रेस्पॉन्सिबल हाउ कैन ही एक्सप्लेन द ट्रिगर मेकानिज्म. सो दिस अरे सॉरी सो दिस वाज द sorry okay so he could not explain the trigger mechanism. Next होची Wagner himself contradicted his statement that Sial floats on Sima without any resistance when he gave the explanation for the formation what is happening for the formation of fold mountains at the edge of continents. बुझियला. Now Wagner himself contradicted his statement that Sial floats on Sima without any resistance when he gave the explanation for the formation of fold mountains at the edge of his continent. जोटा मु कहितली सेटा ही तांकर गोटे क्रिटिसिज्म. ओके सो नेक्स्ट होची evidences what are the evidences जोटा हम पाखरे अछि कि for the formation of this कोन continental drift theory evidences. First evidence हमें कोन पढ़िथिले the jigsaw fit of continents. Jigsaw fit of continents, you can draw like this picture, a small so this is the South America and this is the Africa. Exam रे भी तमे एमिति ही करिवो हैला. You will not be having many such माने scientific picture हवा दरकार, diagrammatic picture हवा दरकार नहीं. This one is the jigsaw fit.
तो जिक्सो फिट तुम निजे लिखि पारिबो the jigsaw fit of the present day coastline of South America and Africa provides an evidence that once they were of same landmass. So এটা হচ্ছে jigsaw fit first evidence. Next evidence कौन थिला ना rocks of the same age across the ocean এটা next evidence थिला. So next होची rocks of same age. Here we will be writing the rocks of same age were found across Atlantic and the Scandinavian countries. Scandinavian countries कौन ना जो ऊपर लैटिट्यूड रे पोलार कंट्रीज जो अच्छा फॉर एग्जांपल डेनमार्क आइसलैंड फिनलैंड ओके स्कैंडिनेवियन कंट्रीज the rocks of the same age were found across Atlantic across Atlantic रे माने तमे बुझेई देले कि एपट साइड रे अछि साउथ अमेरिका एपट साइड रे अछि अफ्रीका एग्जामिनर बुझी गला कि the rocks of the same age were found across Atlantic and Scandinavian countries which could be only possible if the continents were once same landmass. এটা কেতବେଳେ ହିଁ possible হবো যেতବେଳେ continents were once of same landmass. Next ଆମେ କଣ ପଢିଥିଲେ the Tillites deposit, right? Or we will be writing number 3rd is the placer deposits. Placer deposits. Now huge gold deposits in Western Africa, especially Ghana. The Ghana coast आगो Ghana को gold coast को आउतला because it gold मिलतला especially Ghana side रे लिखियो gold coast. Huge gold deposits in the western coast of Ghana were found, but the original gold bearing veins माने जोठी ओरिजिनल गोल्ड डिपोजिट मिलुतला एंड रिवर थ्रू रे डिफरेंट जगह को जाउतला गोल्ड बियरिंग वेन्स were present in South America across the Atlantic. Statement बुझियला ना huge gold deposits in huge gold deposits were found. अच्छा huge gold deposits in Western Africa especially Ghana were found, but the original gold bearing veins were present in the South America across the Atlantic. बुझियला
आउ कौन हो पारिबो ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स कहा विषय लिखिबा प्रथम कथा में लिखिबा aquatic reptile mesosaurus fossil was found in the southwestern coast of Africa and South America. एटा होची फर्स्ट एक्वाटिक रेप्टाइल मेसोसरस कथा कहले बेसी आ एक्सप्लेन करबानी कि व्हाई दे वर फाउंड बिकॉज एमिति गोटे जगह रे आगो थिबो एते एक्सप्लेनेशन करिया पे हम पाके टाइम माने वर्ड भी नहीं वी हैव टू राइट इन विद इन 200 वर्ड्स हैला तो मु एटा तुमके एक्सप्लेनेशन करिया पड़ुची इवन पढ़ी सरला परे तुम याको आउरी कंसाइज करके भी लिखि परिबो aquatic reptile mesosaurus fossil was found in the western coast of Africa and South America. Next होची the lemurs which originated in Africa and Madagascar. it is lemur aguru लिखिदबो fossils लिखिदबो fossils of lemur which originated in Africa and Madagascar was found in the peninsular India. आउ कौन बेसी फॉसिल विषय लिखा दी तीन टाइम लिखा ग्लॉसप्टेरिस विषय लिखिदबा ग्लॉसप्टेरिस फॉसिल was found in all the parts of world which were once part of Gondwana and underwent glaciation. But this much evidence is enough. आउ कौन आउ एविडेंस लिखियो आउ भी लिख पारिबो कौन ग्लेसिएशन रो एविडेंस क्लाइमेटिक एविडेंस इज बहुत अच्छी ठीक अच्छे आउ जदि गोटे एविडेंस लिखिबी glaciation the delights deposits which are formed due to glaciers are now found in those parts of the world which are currently not under glaciation. माने बुझ पारुछ the tilites deposits are found the tilites deposits which are formed due to glaciers are now found in those parts of the world which are currently not under glaciers. It means once
such land masses where a single part, a single land and was near the poles. गोंडवाना जोटा आगु पोल पाखे थिला पर ता परे परे से ड्रिफ्ट करके नॉर्थ वर्ड जाइछि तो एटा हमको एविडेंस दउछि कि गोटे लैंड मास भी थिला आउ कोन ना एबे कंटिनेंट गुरा को ड्रिफ्ट करके डिफरेंट जगह को पळै छथि सेथि पई एबे सेही जगह रे आउ ग्लेशियर्स नाही. So now it's the last part of this theory. Next is the conclusion. Now listen, here I want to tell you one thing. ଯେତେବେଳେ ତମେ ଗୋଟେ आंसर लिखुଛ the three parts जोटा मु कहिथिली the intro, the main body and the conclusion. intro रे तमे आइडिया दउछ कि आगु को कौन मिलिबो एग्जामिनर को आगु को कौन मिलिबो इंट्रो रे ही तमे सब कहि दउछ बट वेरी प्रिसाइसली. मेन बॉडी रे तमे जहा थ्योरी रे अछि से यही लिखिया को बाध्य तमे किछि निजर ऐड करि परिबनी. बट the conclusion is a place where you are free to show your creativity to the examiner. The conclusion is a place where you are free to show your creativity to the examiner. So conclusion तेबे ही भलो हबो जेबे तमे डिफरेंट पार्ट्स को कोन कन्वर्ज करिके निजर नॉलेज यूज करिके you can write a very attractive answer. हला and the answer should be in a positive note. conclusion ता सब बळे positive note रे हमें छाड़ीबा को चेष्टा करिबा. Now how we will be writing the conclusion? Now we will be writing although आज एक्चुअली के लैग हो योज ठीक नेटवर्क प्रॉब्लम हो जो. So although Wagner's continental drift theory couldn't explain the forces responsible for drifting, but एटा ही वेगनर कर मेन प्रॉब्लम थिला सेतपई ताको एको कंक्लूजन रे ऐड करबा. आहुरी भी बहुत कारण थिला ट्रिगर मेकानिज्म सीएल सीमा पर तांकर मेन जोथि पई कि थ्योरी फेल हे गला होच फोर्सेस से फोर्स को बुझाई पारिले नाही ही कुड नॉट एक्सप्लेन तो सेटा को हम कंक्लूजन रे लिखिबा एंड तार ही पॉजिटिव अप्रोच दबा. So although Wagner's continental drift theory could not explain the forces responsible for drifting, but this theory gave a central idea that continents do move, which led which led to the development of grand theories like the grand theories like the plate tectonic theory. See, जेतबले तमे एमिति कंक्लूजन लिखिल तमे एग्जामिनर जानिला कि यू नो व्हाट इज द क्रक्स ऑफ दिस थ्योरी. तमे जानिलो कि ए थ्योरीटा काई कि फेल हेछि तो मेन कारण जोति पई ए थ्योरी फेल हेछि इज द फोर्सेस रेस्पोंसिबल. नाउ यू आर आल्सो टेलिंग द एग्जामिनर that I do have the idea of how to relate things in geography. Now this theory you have the liberty to write good answers in the conclusion. Now you are telling to the examiner that I do have a good idea that this theory is somehow related to the plate tectonic theory. Now because of this theory only the plate tectonic theory came, because या पर ही geographers माने रिसर्च कले कि कौन पे वेगनर कर थ्योरी काम कलानी
से माने जानि पारले कि कंटिनेंट्स तो मूव करूछंती बट फोर्सटा जोटा कहले सेटा वेगनर भूल कहले आ या पर ही ऑर्थर होम्स रिसर्च कले सो हियर यू कैन आल्सो ऐड प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी मु एठी कन्वेक्शनल करंट थ्योरी एथि पई कहलिनी बिकॉज इट इज अ वेरी स्मॉल थ्योरी तार किछि रेलेवेंस नाही ओके सो एबे आई एम गिविंग यू जस्ट 1 minute टाइम टू रीड द होल आंसर समस्त पढ़ एंड टेल मी को पार्ट रे बुझ पारलनी ना आंसर पूरा ठीक अछि जस्ट पढ़ 1 minute टाइम आई एम गिविंग यू पढ़ी सारा पर मत कह कि पढ़ल कि नहीं हो बुझी पारल तो थ्योरी पूरा अरे किए किसी आंसर दियो थ्योरी पूरा पढ़िला बुझीगला पूरा ना कोठी बुझीगलानी हो ठीक अच्छे तो यहाँ हूँ कन्वेक्शनल करंट थ्योरी डायग्राम आराम से बनइब जो रिम गुड़ाक राइजिंग होची देख डाइवर्जेंस होची ना एटा जोटा जदि एपटे राइज है सेटा एपटे जाइए पुणी तलू आसो सेमती एठी भी गोटे तलू आसूँ
ना जोठी लिम्ब गुराक तळु को जाउची डिसेंड होउछंती सेठी कन्वर्जेंस होउची ठीक अछि सो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी ए डायग्राम टा आराम से बनेबो हाफ पेज छाड़ी दियो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी लेख एटा बहुत छोट थ्योरी तार ओनली दीटा पॉइंट अछि लिखै देबे एंड क्लास वी विल एंड देयर जस्ट हाफ पेज छाड़ी दियो ए डायग्राम पे एंड राइट ना convectional current theory was given by Arthur Holmes ठीक अछि according to Holmes the convectional current are generated inside the earth due to the radioactive decay of substances due to high temperature and pressure इंटेरियर आम जो अर्थ पढ़ा या नेक्स्ट स्टेप पर तो तुम जापर कि तलू को जिते आम जा प्रेशर एंड टेम्परेचर बढ़ी चले So first कहले according to Holmes the convectional current are generated inside the earth due to the radioactive decay of substances due to the high temperature and pressure radioactive decay कौन पे हुए ना high temperature and pressure सेठी पे थाए सेठी पे radioactive substances गुरा को decay हो जाए तापर लेख this convectional currents may either converge or diverge leading to convergence or divergence of land masses एठी ऑथरवेंस बुझाई देले कि दिस कन्वेक्शनल करंट में आइदर कन्वर्ज और डाइवर्ज जोटी कन्वर्ज हबो इट विल लीड टू कन्वर्जेंस ऑफ लैंड मासेस जोटी डाइवर्ज हबो इट विल लीड टू डाइवर्जेंस ऑफ लैंड मासेस thus the convectional current theory मुटी चिटी लिखि तुम पूरा लिखिबो explained the reason why the continental land masses as well as the oceanic land masses भाई या बदल लिखिबो oceanic crust drifted. Thus, the convectional current theory explained the reason why the continental land masses as well as the oceanic land masses drifted. हे गला हमरो continental drift theory सरीला convectional current theory सरीला convectional current theory ऊपर किछि क्वेश्चन आसीबनी बकर एटा बहुत छोटो क्वेश्चन बस खाली ती जानिबार अछि कि कोन कहूची ना थ्योरी एक्सप्लेन करछि कि द फोर्स व्हिच वाज रिस्पांसिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ द कंटिनेंट्स एति ही अछि convectional current theory रे
सरिला ओके डायग्राम आराम से देखिक वीडियो अवेलेबल हो बट स्टिल आई एम गिविंग 1 मिनिट टाइम दोज हु वांट टू डू कैन डू जो जगह छाड़ी यू कैन डू दिस बट मन रख सब डायग्राम पर यू हैव टू गिव से डायग्राम भी यू हैव द लिबर्टी आइदर टू डू दिस डायग्राम और आगुरी जो डायग्राम करथिली इन द एग्जाम जो डायग्राम तुमको भल लागियो सेटा कर परिबो एठी हमें आउ गोटे कोन करि परिबा ना वी कैन टेल दिस वन एज द कन्वेक्शन सेल कन्वेक्शन सेल ए छोट छोट गुरा का होची गोटे गोटे कन्वेक्शन सेल एटा होची गोटे कन्वेक्शन सेल एटा गोटे कन्वेक्शन सेल एटा गोटे कन्वेक्शन दिस ऑल आर कन्वेक्शन सेल मझीटा होची मैग्मा ए मैग्मा जोकु ही एठी राइज करूची हला तो दिस इज द क्रस्ट मझीरे होची मेंटल एटा होची कोर कोर आउ क्रस्ट मझीरे जो मेंटल अछि से ही रेडियो एक्टिव डिके होकर कन्वेक्शन करेंट क्रिएट होची जोठी जोठी लिम्ब गुराक डाइवर्ज होची सेठी कंटिनेंटल क्रस्ट भी फाटिकी डाइवर्ज हो जाउची जोठी जोठी लिम्ब गुराक कन्वर्ज होची सेठी सेठी कंटिनेंटल क्रस्ट गुराक भी कन्वर्ज हेबे एंड सेठी ही फोल्ड माउंटेन क्रिएट होबो जोटा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बुझेबो तो ये फिगर रे लिखिबो convectional current of Arthur Holmes. PPT देखे सारा देखो टाइम टिके लगे बिकॉज आई एम डिक्टेटिंग यू ऑल दिस थिंग आई एम डूइंग ऑल दिस डायग्राम आई हैव द लिबर्टी दैट आई कुड जस्ट शो यू द PPTs एंड डिक्टेट दिस ऑल दिस थिंग्स बट सेमिति हुए नहीं PPT रो डायग्राम टा तमे केबे भी एग्जाम रे करि परिबनी दैट इज नॉट ए फ्री हैंड डायग्राम दैट इज ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग एग्जाम रे तमे एई भलिया ही डायग्राम करिवो तो मु कले ही तमे बुझ परिबो सो मते करि कि देखा पड़िबो सेति पे टाइम भी टिके लागिवो सो आई होप आज जी पढ़ार थी आम कन्वेक्शनल करेन्ट थ्योरी पढ़ीदे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी लास्ट क्लास जोटा पढ़ते से भी करदे ना या भितर इंपोर्टेंट होची कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कन्वेक्शनल करेंट इज नॉट इंपोर्टेंट ओनली यू नीड टू अंडरस्टैंड बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी इज इंपोर्टेंट तुमको घोषा पड़ो किसी घोषार ना तुम बुझी जाइछ जिनस निज वर्ड लिखिपर मु तुमको जोटा डाकिली एबे निज वर्ड रू लिखिली सेमती तुम निजे बुझी जाइछ निज वर्ड रू लिख सरला समस्तिंकर ओके सो कार कौन डाउट अच्छी पचारि पार ना यू हैव लास्ट 5 मिनिट्स टाइम जार जहाँ डाउट अच्छी पचारि पार स्वरूप किसी डाउट अच्छी ओके तार किसी डाउट नहीं ना नेक्स्ट हूँ सिलिका तो सिलिका इज न्यू सी हैज जॉइंड द क्लास फर्स्ट टाइम सो यार फर्स्ट रिकॉर्डिंग ग्रुप रे अवेलेबल अच्छी से रिकॉर्डिंग टा ग्रुप रे देखिदेव देन यू विल बी अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी आज क्लास रे किसी डाउट अच्छी कि वॉइस आसुनी जदि भी डाउट थी यू कैन आस्क मी इन द लेटर क्लास नेक्स्ट स्मृति तोर किसी डाउट अच्छी स्मृति लेखा प्रत्याशा ओके मेगा डाउट ओके देन आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आउ कार डाउट नथिबो जार भी डाउट थिबो दे कैन आस्क मी इन द लेटर आज नोट्स लिखिदेल सब नोट्स एभे लिखौछि एभे ही लिखि दियो क्लास रे ही नोट्स लिखिदेबो हला okay so we will be ending this class here now before ending this class I will be telling that
this was our last demo class hela. Now we will be starting our usual, that is classes from just 5 minute टिके रह जाओ पिला माने. So we will be starting our classes from 1st December onwards. Okay. Now एबे पर्यंत जति क्लास हला एठू ही कंटिन्यू होबो, एठू ही सब कंटिन्यू होबो. 1st December onwards we will be starting our ये classes. So today is 27. So today is 27. आज रो भी लेक्चर अपलोड हो जिवो. फर्दर मु आ लेक्चर गुरा को ग्रुप रे अपलोड करबिनी. आई विल बी अपलोडिंग इट इन द ड्राइव, गूगल ड्राइव, एंड तम मानन को ड्राइव रो लिंक मिल जिवो. Because सेठी अपलोड करले दैट ग्रुप becomes very hectic हला. I will be uploading all the lectures in the drive. In case जदि कहार को दिन क्लास मिस हे जिवो कि आधा क्लास रो कोडे जिबा को पड़िबो, लेक्चर रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हेथिबो ड्राइव रे. जस्ट गोटे सेकंड यार रिकॉर्ड